Now this service, पहली बात, it's a notification service, right? And this is fully managed, meaning this is something managed by provider. It's a messaging service, but nature is publication subscription based. Short में हम बोलते हैं इसको pub sub based messaging. Meaning here we have the publisher, we have the subscribers. Publisher is going to publish the message and subscribers are bound to receive those messages, right? Or you can say the notifications, right? So notifications are getting delivered to clients using push mechanism, right? Last time हमने SQS पर बात किया था. SQS is a pull mechanism. Messages needs to be pulled up or polled. लेकिन यहाँ पर push mechanism है, meaning this is something pushed by the service itself. And so it eliminates the need to check periodically for new information and updates. That is, you as a subscriber, you don't need to check it. Rather, you are notified on its own. Push notifications can be sent to operating systems running on mobile devices, meaning this service is compatible for the operating systems running on the mobile devices like iOS, Android, Firefox, right, Windows. And it can also be configured to send the notifications to email, SMS, even Lambda functions or any HTTP endpoint, right? ये भी हम specify कर सकते हैं. So notifications can be sent to any mobile device running with any kind of operating system or to other methods like email or SMS, Lambda functions or HTTP endpoints, right? Service में दो elements हैं, publisher. It communicates to the subscribers asynchronously. Asynchronous means it's not going to be online, right? Offline kind of thing. Publisher is going to publish the message, and later on, subscribers are going to be notified. So, publisher is going to publish the message by sending the message to a topic. और topic क्या है यहाँ पर? Topic is a logical access point और communication channel. जैसे आप जानते हैं ना, YouTube channel हम बोलते हैं उसको, right? बहुत अच्छा example है YouTube channel, right? YouTube में publishers हैं और subscribers हैं, आप जानते हैं, right? So जो publisher होता है वो हमेशा, या YouTuber जो होता है वो हमेशा आपसे request करता है कि okay, subscribe to my channel, right? And hit the bell icon so that you are notified whenever any new uploads are there. Exactly same way. तो जैसे वो बोलता है YouTube channel, ऐसे ही यहाँ पर है आपका topic. Amazon की भाषा में इसको हम बोलते हैं topic, SNS topic. It's a logical access point or it's a communication channel, and this channel contains a list of subscribers and the methods used to communicate with them. कुछ ऐसा, right? ये आपका SNS topic है. इसमें एक publisher है, subscribers हैं, और subscribers what methods they are using to get notified, उनका पूरा ग्रुप जो है that makes communication channel, right? Same. तो जो भी आपको समझ रहे हैं YouTube चैनल को लेकर आप as an analogy समझ सकते हैं इसको. So publisher is going to send the message to the topic instead of using specific destination address. ठीक बात है, हमको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जैसे ईमेल में हम यूज करते हैं वो हम यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं. Rather, publishers are going to publish the message to the topic, meaning to the channel, right? And subscribers. SNS is going to deliver the message to each subscriber for that topic using the communication method जो भी आपने select किया हुआ है. Each topic has a unique name. तो जब हम इस सर्विस को यूज करेंगे तो हमें एक चैनल क्रिएट करना होता है, उसका एक यूनिक नाम है that identifies the SNS endpoint where publishers post messages, subscribers are registered for notifications. Subscribers receive all messages published to the topic to which they subscribe, right? You know it. Practical use cases इसके real उसमें कहाँ चल रहे हैं? You are having so many notifications, you are receiving so many notifications from the Amazon itself. Application alerts हैं, system alerts हैं, right? They're being sent to you as an SMS message or email notifications, right? And these alerts are triggered by some predefined threshold. जैसे
बिलिंग अलर्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अमेजॉन के। So if you define the billing alert that, yes, suppose I am getting a billing of 1,000 rupees, right? I should get an alert. ये आप सेटअप कर सकते हो। So खुद Amazon इस सर्विस को यूज कर रहा है for generating my application alerts and system alerts. Right? Practically जो हम इसको यूज कर सकते हैं, जो आप खुद भी अपने कुछ प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो एसएमएस को। You can receive immediate notification when an event occurs. Last time हमने डेव किया था लैम्डा का, right? उसमें आप नोटिफिकेशन जो है यूज कर सकते हैं, right? So such as specific changes to your auto scaling group. Auto scaling जो है हमने लैब किया था, उसमें हम एसएनएस जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। So whenever scale out operation is happening, right? You should be notified. Yeah, scale in operations are happening. You should be notified. So auto scaling में भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, wherever you have an event. लास्ट टाइम जो हमने लैब किया था उसमें भी हमने इवेंट लिया था। any S3 object create जो है new object if you create, it's an event, so it is going to trigger the lambda. You can even have this SMS integrated, right? So ये नोटिफिकेशन सर्विस है, मैं आपको उसका इंटरफेस जरा शो कर देता हूँ। So go for simple notification service, this one, right? You have to create a topic is a channel। डैशबोर्ड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? So when you create a topic, right? You have to specify the type of queue here, P4 standard. Here I say my topic, display name, वही रख लेते हैं। क्यू जो है स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड। Right, and now you can create subscription. As an admin, actually, I can publish the message, and all those who are my subscribers, they will be receiving the message. ये मैनुअल तरीका है। और मान लीजिए मैं सब्सक्रिप्शन में आपको ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए कैसा करना पड़ेगा। डिजायर ऑफ द सर्विस प्रोटोकॉल मीनिंग मेथड, आई एम यूजिंग ईमेल फॉर एग्जांपल। ये अलग अलग मेथड्स हैं विच यू कैन गेट नोटिफिकेशन। तो मैं ईमेल यूज करता हूँ यहाँ पर, एंड पॉइंट में ईमेल एड्रेस। आप चाहो तो अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर सकते हो, राइट? लेकिन लॉगिन भी करके रखिए। सिस्टम पर होना आप सभी दोनों। कीर्ति, आर यू ऑन द सिस्टम? No, sir, not नो। now. वरुण आप भी नहीं? वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। वरुण, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? You both are connected through mobile? Yes, sir. क्यों? Where is the system? Yes, sir. Hello. हाँ, बोलो बोलो। बोलो वरुण। Can you hear me, वरुण? बोलो जल्दी। अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट पर बैठे हुए हो। वॉइस ही नहीं आ रही। Something is wrong. ओके, देखिए ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अगर हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं तो आपको केवल मतलब यू एज एन एडमिन आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, राइट? यू हैव टू स्पेसिफाई द ईमेल, मेंशन द ईमेल एड्रेस,
और जैसे बोलेंगे क्रिएट सब्सक्रिप्शन तो आपको एक मैसेज जाएगा एज ए सब्सक्राइबर फॉर कंफर्मेशन. You have to accept the confirmation, right? Only then you are going to be a subscriber, registered subscriber, right? And now, as a owner, as an admin, if I publish any message here, ये topic है मेरा, यहाँ से I say publish the message, right? Subject और यहाँ पर मैं message send करता हूँ, publish करता हूँ, so all the subscribers will receive it. अभी आपके मेल एड्रेसेस नहीं है तो आप खुद करके देख लेना इसको. इट्स सिंपल. और अदरवाइज यू कैन इंटीग्रेट दिस सर्विस एसएनएस टॉपिक विद any project also, right? It's a notification, simple है, कोई टेक्निकल नहीं है इसका मेरे से, right? Yes, sir. चलिए, और I have to सर वो कल का क्लाउड फ्रंट भी बताने वाले थे. क्लाउड फ्रंट भी आप खुद करके देखिए, इट इज इजी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. Okay. Yes, sir. Just a moment. Yes. Okay, Varun, no problem. But everybody is there on the mobile. हर आप भी मोबाइल पर हो, क्यों? सर आई जस्ट केम होम, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ. Okay. चलिए, क्लाउड फंड देखिए, क्लाउड फंड में भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कल, Yes, sir. राइट? क्रिएट ए क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूशन. करना क्या है यहाँ पर, आपको ओरिजिन बताना है, राइट? ओरिजिन आपका कुछ भी हो सकता है, वो S3 बकेट हो सकता है, लोड बैलेंसर हो सकता है. आप इन दो में से कोई भी यूज करो, या तो लोड बैलेंसर यूज करो या S3 का बकेट यूज करो, राइट? यू डू इट योरसेल्फ rather मी डूइंग इट. देन ओरिजिन पाथ ये ऑप्शनल है, छोड़ देना. अगर बकेट के अंदर आपने कोई और फोल्डर बनाए हैं, सब फोल्डर बनाए हैं, तो वो पाथ आपको देना पड़ेगा. मींस यू हैव टू स्पेसिफाई वेयर आर योर वेब कंटेंट्स, राइट? नेम ऑफ दिस ओरिजिन Yes. इज डिफॉल्ट, राइट? ओरिजिन एक्सेस पब्लिक परमिशन हम उसको दे रहे हैं, राइट? हेडर सब कुछ इसमें डिफॉल्ट ही है, कुछ ज्यादा हमें चेंज नहीं करना है, राइट? ये है कैशे बिहेवियर, पैटर्न इज डिफॉल्ट, राइट? कंप्रेस ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली, यस और नो आप कुछ भी ले सकते हो. Viewer protocol policy, right? I want that viewers when they are going to make a request for HTTP or HTTPS, दोनों को सपोर्ट करें, या HTTP should be redirected to HTTPS or HTTPS only. So you can go ahead with the first option because HTTPS अभी हमने नहीं किया है, right? नहीं किया मतलब उसके लिए SSL सर्टिफिकेट चाहिए. So जो भी हमने ब्राउजिंग किया अभी HTTP बेस्ड किया, तो you can use first option. देखिए, nowhere you need to make any change. Allowed HTTP methods get and hand ये डिफॉल्ट है, जैसे ही रहने दो उसको. Restrict viewer access no, right? यहाँ पर कैशे की एंड ओरिजिन रिक्वेस्ट जो है ये भी सब डिफॉल्ट ही रहने दो बिकॉज दीज आर डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय अमेजॉन. ये उनकी बनी हुई है ऑलरेडी Yes. सेटिंग्स, राइट? Yeah. बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी नहीं चाहिए. Your request function association ये मैंने नया इंटरफेस अभी किया है. नो वेयर यू नीड टू मेक एनी चेंजेस. वेब अभी नहीं चाहिए, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. ऑल एज लोकेशंस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. सर्टिफिकेट अभी आप इसको मत करो,
leave it. अगर सर्टिफिकेट हम तब करना है जब HTTP ट्रैफिक हमें सपोर्ट करना है. Okay. Okay, sir. बस ठीक है, और कुछ भी नहीं है. So create. So you have to just specify the name. यहाँ पर origin आपको बताना है और बाकी आप इसको create कर दो. जैसे आप create करोगे तो इसका एक endpoint create हो जाएगा. Distribution name जो आता है यहाँ पर domain name ये वाला, इसको लेकर आप browsing करोगे, right? Speed का हमें एकदम से पता नहीं चलेगा because हमारा कोई workload है नहीं अभी ज़्यादा. So when you use this domain name जो create होगा, so it will give you the result. If suppose you have already hosted some website over S3, so उसका आउटपुट आपको दिखाई देगा. ये डोमेन नेम जब आप यूज करोगे मतलब we're going to use the CDN, right? ये जो डोमेन नेम आएगा वो CDN का डोमेन नेम आएगा, CloudFront का, right? So rather using the domain name directly, we're going to use the domain name of CloudFront. So it will forward your request to the nearest edge location. Then through the cloud, you are getting access to the origin, right? That's the whole idea. Yes, So sir. you can do it on your own. Technical इसमें जो बताना था बता दिया है मैंने. क्लाउड वॉच जो है ये मैं जरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग सर्विस है. इट्स अ मॉनिटरिंग सर्विस. और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं सो मॉनिटरिंग इज एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, राइट? जिस पर अभी तक हमने देखा नहीं है. बट इफ यू क्रिएट ए easy to instance for example, so CloudWatch is enabled for it, right? चलिए, now CloudWatch it's a service used to monitor AWS resources and applications in real time. बात है real time. It gives you the details, the health in real time, right? With CloudWatch what you can do, basically तीन activities हैं जो हम कर सकते हैं. You can collect and track metrics, for example CPU utilization over a period of time, right? अगर मुझे मॉनिटर करना है, जैसे मेरा easy to instance है, I want to know what is the CPU utilization going on at regular interval of time. So you can do the setup in CloudWatch, right? You collect and track metrics. अब ये वैसे भी by default है. मैं एक काम करता हूँ, एक easy to instance create करता हूँ, right? And I will show you long-term instance. This is your Linux VM, Amazon Linux, T2 Micro, default key, default network, and security group once again default, storage 8 GB, launch. Right. तो आप देखेंगे यहाँ पर इस VM से रिलेटेड डिटेल्स हैं, सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, और ये देख रहे हैं आप मॉनिटरिंग. दिस इज देयर इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट. यहाँ गो, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट मैट्रिक्स पर स्टेटस बताएगा. मैक्सिमम इतना ही आता है ये. ऑलराइट, सो आई विल स्क्रॉल थ्रू. ये आप देख सकते हैं CPU यूटिलाइजेशन, status check failed any, right? और देखिए network packets in, network packets out, right? In terms of count, in terms of bytes, disk write operations, ये सब metrics हैं, right? लैब के अंदर हम easily CPU utilization को देख सकते हैं. Graphically, it is going to show you what is the CPU utilization going on, percentage. You can configure the settings. I want to know the status, the last 30 seconds, average CPU utilization, the last, let's say, 15 minutes, refresh rate every 10 seconds. So यहाँ पर आपको it is going to show you the status live, कैसा चल रहा है, right?
what is the utilization going on. It will collect the metrics. By default, it is going to collect the metrics every 5 minutes. Every 5 minutes, it is going to see what is the sleep utilization going on, and it will show you the things in the form of graph. But if you now this is something default, but if you want to change this configuration, आप कर सकते हो. Let us see. तो मैं बताना ही चाहता था कि जैसे आप कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं, so by default monitoring is there enabled, right? And few select metrics पर वो आपको status भी बताता है, which you can view it separately, right? Okay. All right. So you can collect and track the metrics. You can create alarms and that send notification to SNS topic. आप alarm setup कर सकते हो, which is going to send the notification to the SNS. अगर आपने SNS configure किया है, so you can integrate SNS topic with this CloudWatch, and you are going to be notified whenever any threshold is reached. So this is another thing, right? तो पहला metrics को collect कर सकते हैं, track कर सकते हैं, alarm setup कर सकते हैं, right? तो जैसे ही अलार्म जो है रेज होगा, so SNS is going to be triggered and you are notified based on the configuration method. And one more thing is action. Make changes to the resources. As you are getting the notification, so what action you want to take? So make changes to the resources being monitored based on rules you define. For example, auto scaling policy. Auto scaling बहुत अच्छा example है, right? So उसमें अपन threshold define कर रहे हैं. If my utilization, seat utilization is more than 70%, for example, तो 70% हो गया आपका threshold level. So action क्या करना है? We define add new instances, right? But when this activity is happening, SNS you are notified. एक नया इंस्टेंस लॉन्च हो गया है या थ्रेशोल्ड 78% क्रॉस हो गया है, you are notified, right? So you can execute auto scaling policy to add or remove the instances in application tier, right? Similarly, if suppose I say my CPU utilization is less than or equaling to 20%, so action remove the servers. This you can define, right? तो ये तीन बातें हैं जो हम CloudWatch में सेटअप कर सकते हैं, right? CPU utilization, you Yes. can collect the metrics, you can create alarms, and you can Auto scaling. take the action. चेंजेस क्या करना है, जैसे ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में वी कैन डिफाइन द पॉलिसी, ये लाइव आपने किया होगा. देन दो तरह का मैट्रिक है. बेसिक इज देयर बाय डिफॉल्ट, जो अभी मैं आपको शो कर रहा था वो बेसिक मैट्रिक है. उसमें क्या हो रहा है, डाटा पॉइंट्स आर सेंट एवरी 5 मिनट्स, राइट? हर 5 मिनट में मैट्रिक्स कलेक्शन वो करता है फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्री सेलेक्ट मैट्रिक्स एट नो चार्ज. तो इसमें जो मैट्रिक्स हैं वो लिमिटेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफॉल्ट है, और जो डाटा पॉइंट्स हैं मीनिंग द स्टेटस इट इज गोइंग टू चेक, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज एवरी 5 मिनट्स. बट इफ यू एनेबल डिटेल्ड मॉनिटरिंग, तो बेसिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, डिटेल्ड मॉनिटरिंग एनेबल करना पड़ता है. सो इन दैट केस डाटा पॉइंट्स आर गोइंग टू बी सेंट एवरी मिनट, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. हर मिनट में वो आपको स्टेटस बताएगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द select metrics going on, but it is chargeable, needs to be enabled, it's not there by default. CloudWatch does not aggregate data across regions, but can aggregate across zones within the region. Aggregation means summarization. जो log data create हो रहा है, if suppose you want to summarize that data, because you have got so many number of resources running in a region into different zones, so all the resources don't get logged in, they can be aggregated together, right? But across the zones within the region, not across the region. तो यहाँ पर आप देख सकते हो this is the Linux VM, right? अगर मुझे centralized CloudWatch enable करना है, so you can do that. CloudWatch as a separate service.
Right. I can use this CloudWatch to create alarms. चलिए alarms में देख लेते हैं. All alarms. Create alarm. मैं इसी VM के लिए अलार्म सेट करके आपको बताता हूँ. Create alarm. Select metric. और I'm going to, in North Virginia region, I'm going to use EC2, for instance, metric. Yes. Instance ID जरा देखना पड़ेगा क्या है इसका. Details. Instance ID. Copy this instance ID and make a search on this instance ID. Yes. Now you can see this is my current EC2 instance और ये metrics है इसकी. Right. Disk write bytes, disk write operations, network packet in. हम देखेंगे यहाँ पर CPU utilization. This is a metric. I want to monitor this thing. इसके लिए अपन alarms create करेंगे. CPU utilization. Right. So for this Linux machine, this one, this instance ID ये है. I am going to create an alarm for CPU utilization. Average base पर status निकालेगा. Period. Every minute. इसमें डिटेल मॉनिटरिंग हम इनेबल कर देते हैं. कैसे करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो. गो टू द एक्शन, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट और detailed monitoring, third option, enable. After you enable detailed monitoring, EC2 console displays monitoring graph with a 1 minute period for the instance. Every minute वो आपको शो करेगा. चलिए confirm. But this is chargeable, right? So यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर जो उसको अपडेट बताएगा वो every minute. ये डाटा पॉइंट है, राइट. ये डाटा पॉइंट्स है. तो अभी इसने 5-5 मिनट में डाटा पॉइंट लिया है, लेकिन अब वो हर मिनट में डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा. ओके, ऐसा आप सेट कर सकते हो. और यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ अलार्म कंडीशन. थ्रेशोल्ड टाइप स्टैटिक. if my CPU utilization is greater than or equal to, नहीं, lower than कर देता हूँ. lower than or equal to suppose 25%, right, for two alarms, two data points. और दो डाटा पॉइंट कंडीशनली 25% से अगर नीचे है, लोअर देन और इक्वल टू 25% और लेस, अभी इसी यूटिलाइजेशन कम ही है, राइट. सो करना क्या है, टू सेट एन अलार्म. आप देख सकते हो ये 25% का अलार्म यहाँ पे सेट कर रहे हैं बेंचमार्क. सो नेक्स्ट करना क्या है, यू कैन स्पेसिफाई द नोटिफिकेशन, राइट, यूजिंग SNS टॉपिक, और यू कैन डू द ऑटो स्केलिंग. अभी हम EC2 एक्शन कर सकते हैं. ऐड एन EC2 एक्शन. जैसे अलार्म में आएगा इन अलार्म तो क्या करेगा, इट विल स्टॉप द इंस्टेंस, राइट. यू कैन स्पेसिफाई टर्मिनेट और रिमूव, राइट. तो मैंने बोला कि अगर मेरा यूटिलाइजेशन 25% से नीचे है तो क्या करना है, स्टॉप दिस इंस्टेंस. इज गोइंग टू सी फॉर टू डाटा पॉइंट्स. अलार्म का नाम मेरे से डेमो अलार्म. अब देख सकते हो डाटा पॉइंट यहाँ पर है, बिल्कुल 0 पर है, राइट. ग्रेट. So this alarm we have set. Insufficient data मतलब भी
डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है, ये कंडीशन है। The massive utilization is less than or equal to 45% for 2 data points within 2 minutes. 2 मिनट के अंदर देखेगा क्योंकि हर मिनट पर वो रिफ्रेश करेगा। सो इट विल, ये ग्राफिकली आपको बता रहा है सब 0% पे ही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 2 डाटा पॉइंट के बाद इट इज गोइंग टू स्टॉप द इंस्टेंस एक्शन। यहाँ पे देख लो EC2 when in alarm stop the instance with ID, this is the ID. Okay, fine. So we'll see the utilization the hanging, right? We have to wait for about 2 minutes hopefully. You know, yeah, we right. Yes, sir. Stop it. यहाँ गया या अलार्म में और इस इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया है, राइट। तो मैंने टाइम पीरियड कम रखा, राइट, 2 मिनट के अंदर वो हो गया एंड इट स्टॉप्ड बिकॉज यूटिलाइजेशन वाज 0। ओके, जस्ट टू शो यू। तो ये हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. R&D करने को बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हो, बट दीज आर इजी, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, जितना आप इसको करोगे उतना समझेगा, राइट। बोलिए, Okay, sir. एनी क्वेश्चन? आगे No, कोई भी sir. क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हो मैसेज ग्रुप के अंदर, राइट। Yes. राइट, मैं वीडियो सब अपलोड कर दूंगा और उनको मैं बोल दूंगा आपकी मैडम को they should be uploading it for you, alright, the meaning video. Yes, sir. Okay, sir. Fine, चलो, Okay, sir. Thank you. alright.